the traditional classification of accounts which we discussed yesterday, and on basis of this we have rules for debit and credit, which were: for personal account you debit the receiver, for the giver his account is credited. Under real account we debit what comes in, credit what goes out, and for nominal accounts all expenses and losses are debited while all incomes and gains are credited. Okay, so we'll start with the first question on understanding of these rules and then how to record a journal entry. For that, the question is there on your screens. Okay, so first let us understand which account needs to be debited, which needs to be credited for each of the transaction, and then we will pass the journal entries in a proper format. Okay, now you are given the transactions in the journal of Ashok for the month of April 2012. So you are given the dates. On 1st April, business started. On 3rd April, there were purchases and so on. Let's start with the first entry, and wherever any point is not clear, there's any doubt, you can stop me and we'll discuss that. Okay. Now Ashok started business with rupees 2 lakh. It means that the business has been started with a capital of 2 lakh rupees. Owner जो भी funds, जो भी assets लाता है at the starting of the business is known as capital. Okay. If nothing is specified, this means that this is brought in cash. So the two accounts which are involved here will be the cash account and the capital account. Okay. Now we have the name of the two accounts which are involved. The next thing that needs to be done is to classify them as per the traditional classification. Now capital is brought by the owner. It is a personal account, while cash is an asset for the business. It is the real account. Okay. After that, we follow the rule which we have done. For personal account, debit the receiver, credit the giver. Now Ashok is giving funds to the business, so credit the giver. On the other hand, cash is coming in the business. So for real account, the rule is debit what comes in, credit what goes out. So on this basis, we get the debit and credit from these two accounts. Capital account will be credited and cash account will be debited. Okay. So we start with identification of the accounts, then we classify them, apply the rule, and then decide which account needs to be debited and which account needs to be credited. Okay. So this will help us very easily pass the journal entry. But first we will apply this rule to each of the transaction given. Identify debit or credit. Now, Pavan, all the entries you are making right now are in the books of business and not in the books of Ashok, because as per the separate entity concept, we are preparing the financial statements for the business. And Ashok is just one of the contributors of capital in the business. So as per this question, he's the one who has started the business and he has contributed capital to the business. So business की liability है to return that money when it winds up. Again, Ashok becomes a simple creditor for the business. Okay.
तो जो ओनर पैसा लाता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है. इन द जर्नल ऑफ अशोक, दिस माइट बी रिटन बिकॉज अशोक ये सोल प्रोप्राइटरशिप है. पर आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि एक ही ओनर है, सोल ओनर है, तो उन्होंने इसलिए ऐसे लिख दिया. आपने जो भी रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन, दैट शुड बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस. ओके, दैट नीड्स टू बी very clear to everyone. Okay, so let's move to the second transaction. I'll solve 2, 3 for you and then we'll try solving on our own. So purchased goods for cash 50,000. So as I told you earlier also, goods per se कोई अकाउंट नहीं होता. अगर गुड्स को परचेज कर रहे हो, it comes under the purchases account. If you're selling goods, it comes under the sales account. If some sales are returned back, it becomes sales return account. If some purchases are returned back, it becomes purchase return account. So no account by the name of goods appears in the books of accounts. So since we have purchased goods, our first account will be purchases account. And these goods have been purchased for cash. So second account will be the cash account. I have identified the two accounts in this transaction. Now I classify them. Purchases account. Purchase is an expense for the business. All expenses and incomes come under the nominal account. While cash, you people already know, is a real account. So it will come under the real account. Now to apply the rules, nominal account का rule क्या होता है? Debit all. Vandan, I'll come to you. Just give me a minute. Let me complete this transaction. For nominal account, the rule is debit all expenses and losses. Okay, so purchase is an expense for the business. खर्चा हो रहा है business का. Cash account, real account, debit what comes in, credit what goes out. When I make a purchase for the business, cash is going out of the business. So credit what goes out. So very clearly I have the debit and the account to be credited in this transaction. Yes, Vandan, you had a question. Please ask, unmute yourself. यस Hmm. मैम, आपने बताया था कि मैम जो हमारे एसेट्स होते हैं मैम, जैसे लैंड के में आते हैं. Hmm. I think there's some network issue. Vandan, if you can type in your question in the chat box. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्योंकि मुझे यस आपकी मैम, अब आवाज नहीं आ रही है. आ आप रही है दोबारा मैम. रिपीट. आप ठीक है? हाँ, ठीक है. मैम हाँ जी मैम बेटा, जैसे आप आपने हाँ बताया दोबारा था रिपीट कर. कि हाँ जी, मैम लैंड, कैश, फर्नीचर और मशीन में हमारे रियल अकाउंट में आती है. हाँ जी. तो मैम हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किए हैं, तो फिर हम्म. मैम ये रियल अकाउंट में नहीं आना चाहिए. क्या जो परचेजेस करी हैं गुड्स का, यस मैम. गुड्स एज पर कोई अकाउंट ही नहीं है, तो वो एसेट में नहीं आएगा. अगर गुड्स परचेज करोगे यस परचेजेस मैम. में आएगा, सेल करोगे तो सेल्स में आएगा. क्योंकि गुड्स में जब डीलिंग होती है, वो बिजनेस के लिए एक्चुअल में सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो वही होता है. कोर बिजनेस तो यही है कि गुड्स में डील करना है. जब परचेज कर रहे हैं तब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो रहा है, जब सेल कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए रेवेन्यू बन रहा है. तो हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं. यस मैम, आगे समझ. ठीक है. यस, एनी अदर यस मैम. क्वेश्चन?
Okay, so then I'll take up one more entry. I'll take up the entry on 9th. Okay, आप लोग बीच वाली entries pass करोगे अभी. I'll give you time to solve. I'll take up one more entry. Let's take it for sales instead. I'll take the entry on 15th, which you see is sold goods on credit to Chandar for rupees 15,000. Okay, so now goods have been sold. So one account is your sales account. Okay. Now, second thing to observe here is that goods have not been sold on cash basis. So cash is not coming in the business. It is being sold on credit basis. So we are adding one debtor to the books of accounts. We are adding one debtor, Chandar, to our business. Okay, so sales, they are basically income revenue for the business. So it will come under nominal account. And then Chandar is a debtor for the business. It comes under personal account. We now apply the rule for nominal account. Debit all expenses, credit all incomes. Okay, and for personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. Chandar here is receiving the goods. So we debit the receiver. Okay, so again we can identify that sales account needs to be credited and Chandar account needs to be debited. Okay, so I hope to some extent this is making sense to everyone. What we will do is I'll give you 5 minutes. Please take up the transactions first. These transactions which we have left in between, and then these transactions, try attempting them in the same manner, and then we'll discuss them one by one. Okay, all of you try these entries, and then I'll ask randomly anyone. So all of you start solving this.
Take 2 minutes more class, then we'll start discussing. मैम 30th वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। मैम ये ड्राइंग्स हो रही है ना, ये तो इसको हाँ कैसे हाँ, करेंगे? ड्राइंग्स हो रही है, मैं बेटा डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। जिसमें भी कंफ्यूजन ओके है अभी आप ड्रॉप कर दो उसको, ठीक है। वील डिस्कस ईच ऑफ द एंट्रीज। ओके। Okay, so class will start with the entries from fifth onwards. Yes, Aman, unmute yourself. Aman is not here. Ayan, मैम पहले परचेज हुआ है और कैश। मैम परचेज हो गया नॉमिनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट। मैम नॉमिनल अकाउंट में okay. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रियल में क्रेडिट गोज आउट। मैम परचेज डेबिट Okay, हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है। परचेजेस अकाउंट है एक, और एक मिनट बेटा, ये परचेजेस में नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर परचेज हुआ है, गुड्स परचेज नहीं हुए। ओके जब मैम। गुड्स परचेज या सेल होते हैं तभी हम परचेजेस या सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। ओके, सो अमन हैज आल्सो आंसर्ड इन द चैट बॉक्स। फर्नीचर अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर परचेज करा है। और यू आर राइट दैट द सेकंड अकाउंट विल बी द कैश अकाउंट। देन रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। So furniture is coming in the business, it will be debited. Cash is going out of the business, it will be credited. Okay, so Ayan, I hope this is clear. यस मैम। Yes, okay, so let's move further. मैम फर्नीचर मैम कौन सा वो हो गया मैम, पर्सनल रियल रियल एंड नॉमिनल? रियल अकाउंट होगा ना, एसेट लिया ना आपने बिजनेस के लिए। तो मैम दोनों रियल हो गया फिर, हाँ जी, कैश दोनों भी और। रियल, हाँ ओके मैम। फर्नीचर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दीप्ति। यस मैम। यस बेटा, सेवेंथ की एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट Okay, so 10,000। there are, okay, thank you. So there are two accounts. You have made some sales and for that you are receiving cash. So cash is a real account. Cash is coming in the business. So cash will be debited. On the other hand, the next account is sales account. You are selling some goods. That is a nominal account. You are making revenue for the business. So all incomes and profits are credited.
So sales account is credited. Next, Gaurav. The next entry is for 9th. Gaurav, आप बताओ बेटा 9th की एंट्री. Okay, for 9th, yes. I can't hear you. Gaurav, some network issue. Okay, मुकुल, आप बेटा बता दो 9th की एंट्री. Okay, in the chat box you want to answer. So for 9th entry is purchased goods on credit from Birbal. So one is purchases and to normal account. Yeah, Birbal account. I think some typing mistake. Yes. Okay. Thank you, Gaurav. So there are two accounts. One is purchases account and other is Birbal account. Since you are not making purchases on cash basis, you are adding a creditor to the business by the name of Birbal. Birbal is a person, so it is a personal account. Purchases are expenses, so it is a nominal account. So rule for nominal account is debit all expenses and losses. And for personal account, debit the receiver, credit the giver. So Birbal here is the giver. He is giving goods on credit to the business. So it becomes a credit account for the business. Yes, Mukul, you had a doubt. Anyone else? Any doubt till now? No, ma'am. Okay, so let's move मैम forward. मैम एक डाउट है मैम. हाँ जी पूछो. मैम जैसे मैम मैम 9th वाले में मैम हमने मैम गुड्स परचेज के क्रेडिट पे, तो मैम हाँ जी. हमारे गुड्स तो हमारे बिजनेस के अंदर आए, तो मैम वो क्रेडिट नहीं हाँ होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट में? बच्चे, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जो यस मैम. रिसीव या कम्स इन गोज आउट है वो सिर्फ रियल अकाउंट के लिए रूल है. परचेजेस अकाउंट का रूल है, यस सॉरी मैम. नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स. ठीक है. तो हम जैसे इसमें हमने मैम गुड्स परचेज के 20,000 के, तो हाँ हमारे डेबिट हो जाएंगे हाँ जी, क्योंकि नॉमिनल वो अकाउंट आपका से. खर्चा हो रहा है. हाँ, नॉमिनल अकाउंट है, आपका खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट होंगे. और मैम हमारा 20 बार पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट हो गया. हाँ, क्योंकि ही इज द गिवर, ही इज गिविंग गुड्स टू यस बिजनेस. ओके. यस Okay, मैम. let's move further. Okay, next, Harshita. Entry for 11th, Harshita. Yes, ma'am. हाँ जी. Purchases account will be debited and cash account will be credited. Okay, so purchases हैं again, but this It's a time the nominal account. purchases is a nominal account, as all of you know, and these purchases are in cash. So purchases will be debited. Cash is a real account going out of the business, so it will be credited. Okay, thank you. Next, 15th we have discussed already. Karthik, entry for 19th. Karthik. Bank account debited to cash account. Okay, so class, please understand this entry. You are taking out business cash from the business and you are depositing that amount in the bank account. So there are two accounts involved here. One is the bank account and other is the cash account. So as Karthik said, that bank account will be debited, cash account will be credited. So prior to that, just be very clear, bank account is a personal account, cash account is a real account.
For personal account, debit the receiver. You are adding funds to your business. Your bank account is receiving money. So it will be debited. On the other hand, cash is going out of the business. So cash account will be credited. Okay, so bank account is debited, cash account is credited. So I hope this entry is clear to everyone. One of you asked a question yesterday also कि हमारा जब अकाउंट में पैसा आता है तो वो क्रेडिट क्यों होता है? Yes, ma'am. Yes, because you asked. So it would be better when I explain this with modern classification, क्योंकि वहां पे liabilities और assets वाला point आ जाएगा, तो मैं वहां पर explain कर दूंगी आपको. ओके? Okay, ma'am. अभी के लिए अगर समझना है सिंपल टर्म्स में, तो बैंक जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो वो बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है तो वो डेबिट होगा. फॉर बैंक it is some addition, so that will be debited, and in your account you are the receiver, so your account is credited. Okay, but a better explanation will be given with the modern classification why your accounts are credited with deposit. Okay, because for bank the funds which you deposit are a liability. Okay, you can demand those funds back from the bank at any point of time. तो वो liability होती है, इसलिए बैंक उसको अपने पास डेबिट करता है. ठीक Okay. है, अभी बस इतना समझ लो, आगे मैं इसको दोबारा आई टेक अप दिस पॉइंट अगेन. ओके देन मयंक. Yes, ma'am. यस मयंक 22nd वाली एंट्री बताओ बेटा. Ma'am, Birbal account debit to cash account. Okay, so cash paid to Birbal. Birbal is personal account. Receiving money, his account will be debited. Cash is going out of the business. Cash is real account. It will be credited. Birbal will not be nominal account because we are crediting it that way. Which account? Birbal account. Yes, ma'am. Beta, Birbal is a personal account. It is in name of a person. Okay, He ma'am. was the creditor for the business. Okay, ma'am. Okay. Yes, Suraj. या मैम सपोज करिए कि अगर 22nd क्वेश्चन में अगर यहाँ पे सैलरी पेड टू बिरबल 5000 रहता तो क्या होता है मैम? तो सैलरीज एक्सपेंसेस होती हैं बेटा. या मैम तो दैट कम्स इन नॉमिनल राइट? हाँ, नॉमिनल होता, सैलरीज डेबिट होती, और बीरबल को सैलरी रिसीव हो रही है तो वो रिसीवर होता, तो वो क्रेडिट होता. ओके मैम. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू द 23rd April entry. Okay, so for 23rd, yes, Mridul will answer. Mridul. Ma'am, cash account debit to Chander account credit. Okay, so received cash from Chandar, cash is coming in the business. Chandar was a debtor for the business. So cash when comes in is a debit. Okay, and Chandar is the giver right now, so his account will be credited. Okay, next is Sakshi. Sakshi. I'm noting down the names who are absent here. Not be getting the attendance. At least use the chat box if there's any network issue at your end. Yes, Neha.
नेहा, प्रियंका. Ma'am, wages account debited to cash account. Okay, so you have two accounts here. One is wages, and you are paying the wages in cash. Okay, Sakshi is here. Okay, so wages are again expenses. All expenses are debited as per the nominal account. Cash is going out of the business. It will be credited. Okay, and then we have the last entry. Yes, Praveen, try and attempt the last entry. Yes, ma'am. There will be two account. One will be drawing, which will be debited, and other will be cash, which will be credit. Okay, good. So when the owner withdraws money for personal use, it is the drawings account. Drawings are in name of a person. So it is under the personal account. Okay, so drawings will be personal account. Cash, all of you know by this time it is a real account. Ashok is the receiver. Debit the receiver. Cash is going out of the business. It will be credited. Okay, I hope this is clear to everyone. I'll quickly make the format for journal. We still have 3-4 minutes left. So that you have 2 days in between, I'll give you one more question as homework to be uploaded on Classroom. So journal is the book where these entries are made. उसका format कैसे होता है? I'm writing it down. Please have a look. First column is date, then particulars, तो क्रेडिट और डेबिट पूरा पूरा लिखना आप. there's some space issue here. So debit credit in rupees, you write the amount here. Okay, so let me explain. Date is the date on which transaction takes place. Particulars में आप entry pass करते हो और उसकी नरेशन लिखते हो. ठीक है. लेजर फोलियो कॉलम क्या होता है? जहां पर ये एंट्री दिखेगी इन दी स्पेसिफिक लेजर अकाउंट. So for the time being, you are leaving this column blank because when I take up ledger, I'll explain you what we mean by ledger folio. Okay. Debit में debit की amount, credit में credit की amount आएगी. Someone has raised your hand. Anyone is having? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम जो लास्ट एंट्री है अशोक वाली पर्सनल अकाउंट की, मैम अशोक ने अपने नाम पे ड्राइंग्स ली है, तो वहाँ पे अशोक का अकाउंट आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट आता है. जो पर्सनल यूज के लिए आप लेते हो पैसा, वो ड्राइंग्स अकाउंट में आता है. ओके मैम. ओके ओके, सो प्लीज. हाँ जी मैम एक आप एग्जांपल भेज दोगे मैम, जर्नल कैसे फिल करते हैं मैम? मैं वही एक एग्जांपल में अभी आपको करवा रही हूँ. फिर आप यही क्वेश्चन को पहले जर्नल में करोगे और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगी. अब मैं 2 एंट्रीज यहाँ पे करवा देती हूँ आपको. ओके, यू कैन ज्वाइन दी नेक्स्ट क्लास 5 मिनट्स लेटर. तो फर्स्ट एंट्री आई एम टेकिंग अप फ्रॉम हेयर. हमेशा क्या करते हैं? डेबिट अकाउंट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट अकाउंट उसके बाद लिखते हैं. So this entry is being made on 1st April 2012. First I write the account that is debited. Then I write the account that is credited. Okay. So when I write the account that is credited, उससे पहले मैं to लिखती हूँ. So cash account debit to capital account. कैपिटल अकाउंट के आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते डायरेक्टली, तभी मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है. यू आर नॉट राइटिंग टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. टू का मतलब ही यही होता है, व्हेन आई ऐड दी प्रीफिक्स टू, इट मींस कि ये वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है.
तो आपको दोबारा से वहां पर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज द जर्नल एंट्री दैट इज पास्ड. देन आई टोल्ड यू कि हम एक नरेशन लिखते हैं. नरेशन होता है कि एंट्री किस बारे में है. तो उसको स्टार्ट करते हुए हम बीइंग लिखते हैं और उसके बाद जो भी एंट्री आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको एज इट इज लिख दो. बीइंग अशोक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ऐसे करके आप ये पूरी जो नरेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसके आगे बीइंग लगा के आप यहाँ पर लिख दोगे. ठीक है. उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम यू लीव ब्लैंक. डेबिट और क्रेडिट दोनों ही 2 लाख रुपीज से हो रहा है. तो 2 लाख हेयर एंड 2 लाख हेयर. ओके, सो दिस इज 2 लाख अमाउंट है. तो डेबिट के आगे 2 लाख लिखा और फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके आगे 2 लाख लिखा. ओके, तो ऐसे करके आप जर्नल में एंट्री पास करते हो. I'll take up one more entry. Let's take up the last entry here. Okay, I missed that page. I'll take up any one entry from here. So say we take up purchases and cash re-entry on 11th. Again, how will I write? 11th April 2012 in the date column. पर्टिकुलर्स में पहले डेबिट वाला अकाउंट परचेजेस अकाउंट डेबिट. डेबिट के लिए DR टू कैश अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे आप डैश कर दो या इसको ब्लैंक छोड़ दो. देन दी नरेशन बीइंग, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, वो आप यहाँ पर लिख लोगे. लेजर फोलियो कॉलम विल बी ब्लैंक. डेबिट वाले कॉलम में परचेजेस अकाउंट के आगे आप अमाउंट पुट कर दोगे. क्रेडिट वाले कॉलम में कैश अकाउंट के आगे आप अमाउंट पुट कर दोगे. एंड में हम जब सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखते हैं विच विल बी इक्वल. It should always be equal. This is how you pass the entries in the journal. मैम इसके अंदर मैम सेम अमाउंट लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट के अंदर. हाँ, सेम अमाउंट आएगी. अभी हम सिंपल एंट्रीज पास कर रहे हैं, इनमें डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम आएगी. Ridul, okay. Who has a question? Suraj, you are having a question? Yeah, ma'am. In a particular, it is compulsory to, ma'am, like first we have to mention the debit account. Yeah, this is the format which is followed. पहले डेबिट फिर क्रेडिट. Yeah, it is compulsory. Okay. Okay, Vikas, you want to see the previous slide? Here is the slide. Any other question by that time? मैम I'll just. मैम देखिए तो आपने जर्नल बनवा दिया मैम आपने ये टेबल. हाँ और जी. मैम और मैम जो आपने सब अभी लिखवाया था जो मैम ये आपने नंबर वाइज लिखवाया था इसे क्या कहते हैं मैम? क्या चीज जो नंबर वाइज लिखवाई है, क्या चीज? कैपिटल मैम, फिर मैम पर्सनल, फिर क्रेडिट गिवर मैम, ऐसे जो भी आपने मैम पूरा भी लिखवाया टेबल से पहले. हाँ, वो बेटा आपके वर्किंग नोट्स हैं. मैम ये बनाने होते हैं मैम हमेशा? नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ये रफ में आप बना लो.